Hello everyone, I hope you are doing well. Since last few lectures, we have been discussing about the lesson Into the Wild. This is the second part of it. This lesson told us something about the experiences of the Shaaz Jung, who is one of the leading photographer, wildlife photographer, cinematographer and the great lover of big cats. So now we are going to see the next part of it. So let's see the next part of it. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please to subscribe our channel for new and innovative learning of English language. So please do subscribe. So let's see the next part of it. Till now we have discussed that how his life was changed and how he exactly involved in the field of wildlife photography. So let's see, now he had given the names to the leopards. He had given the names to the leopards like Saya, Scarface and Pardus. So Pardus is the name of an old leopard. So here already we have discussed about the great fight between the Scarface and Pardus. And in this particular fight, Scarface won this battle, won this competition, and now he became the new king of this jungle. So let's see Saya, Scarface and Pardus. The leopard that lost to Scarface have also led Shaaz down a different path of discovery. Because we all know it very well that forest life is like a treasure. जितना आप अंदर जाओगे, जितना आप ढूंढने की कोशिश करोगे, उतने ही नई चीजें, उतने ही नए एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे और उतनी ही नई चीजें आपको मिल जाएंगी. Because this is like a treasure. So let's see that now he had given the names to the leopards like Saya, Scarface and Pardus. Remember all these three names because they have the special significance. So here it's very important when he's researching, when he's taking or he's capturing the life of the Scarface, that time he found many new kind of the things. So in his discoveries, what kind of the things he had found, let's see. So learning about them and the loss to their habitat has led Shaaz to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India. This is the name of agency which was started by Shaaz Jung. ये उस एजेंसी का नाम है जो शाज़ जंग इन्होंने जो एजेंसी स्टार्ट की है टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, टू कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट लाइफ, उनके लिए या इनका प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो एजेंसी है वो आज काम करती है. एंड ही हैज स्टार्टेड हिज ग्रेट एफर्ट बाय द नेम ऑफ दिस BCRTI. द फुल फॉर्म ऑफ BCRTI is Buffer Conflict Resolution Trust of India. So this is the full form of BCRTI. Remember this full form, okay? It's an agency that educates villagers who live on the fringe of the forest on the importance of conservation. So here we all know it very well that people and animal, if you have a big jungle or forest around your village, so that time remember there is no any kind of the buffer zone. Buffer zone means there is no any kind of the border. So here it's very important that people are living at the edge of at the corner of the forest, and we all know it very well that many times we are in the habitat of the forest life or the forest animals, and many times we have so many bad experiences, we have so many good experiences as well, because we all know it very well जब कभी हम किसी और घर में घुसते हैं और के घर में जब हम बिना बुलाए जाते हैं, so definitely remember we have the bad experiences. And here the same thing is there. This agency BCRTI, this agency works or educates the people or the villagers, those who are living near the forest. फॉरेस्ट के नजदीक रहने वाले जो लोग हैं, तो इनको एजुकेट करने का काम ये एजेंसी करती है और उनको बताते हैं कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनका प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है. ये सारी चीजें ये जो एजेंसी है वो लोगों को बताकर उनमें अवेयरनेस क्रिएट करती है और उसके बाद में यही विलेजेस क्या करते हैं, वॉलंटियर्स बन के
अपना अपना काम अच्छी तरह से करते हैं. सो दिस इज द एजेंसी विच वर्क्स फॉर द एनिमल्स, विच वर्क्स फॉर द फॉरेस्ट and their life. And of course, this is, we all know it very well, that this is the fringe of the forest on the importance of conservation. Conservation करना, उनका protection करना बहुत important चीज है. We are in the heart of the man-animal conflict zone. जिस जंगल में ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तो उस जंगल में ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको हर तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो बॉर्डर्स हैं वो सील नहीं है, वहाँ के जो बॉर्डर्स हैं वो अच्छी तरह से क्रिएट किए गए नहीं है. तो इसलिए जो एनिमल्स हैं वो कभी ह्यूमन बींग्स के जो होम्स हैं या सेटलमेंट्स हैं उसमें उनमें घुस जाते हैं, और उसकी वजह से कई बार लोगों का नुकसान हो जाता है. और यही चीज़ एनिमल्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि मैन, एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर द फॉरेस्ट, व्हेन मैन एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट, दैट टाइम मेनी पीपल हैव द बैड इंटेंशंस, because some of the people they are doing the hunting. वो बहुत बार शिकार करते हैं, एनिमल्स की जान ले लेते हैं. तो ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती रहती हैं. सो हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही सेड दैट वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. वो कहते हैं कि मैन एनिमल या इंसानों के और जानवरों के बीच का जो संघर्ष है, तो इसके बीच के, इसके हार्ट में ये अपना काम कर रहे हैं. Why? Because he explains that there is no specific buffer zone here around Nagarhole. Nagarhole is the area, and of course in this area we have the big jungle, and in this particular area there is no any kind of this specific buffer zone. Buffer zone means there is a neutral area, because animals needs the privacy. एंड ऑफ कोर्स अगर हम वहां पे घुस जाते हैं तो वहां पे हम उनकी प्राइवेसी का क्या कर देते हैं, पूरी तरह से हम उनकी प्राइवेसी भंग कर देते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट वी नीड द स्पेसिफिक बफर जोन्स फॉर द एनिमल्स. सो ही सेड दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द न्यूट्रल जोन, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द प्राइवेसी फॉर द एनिमल्स, बिकॉज द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट ends where the fields begin. जहां पे जंगल का एरिया खत्म होता है वहीं पे लोगों के जो खेत हैं उनकी शुरुआत हो जाती है. So there is no any kind of the buffer zone. In this problem, in this or to resolve this particular problem, he had founded this organization, that is BCRTI. This agency works for the buffer zones and they educate the people to protect or to conserve the nature and the animals. So in dry season, what exactly happened in Nagarhole? Let's see. The core area of the forest ends where the fields of the farmers begin. In dry season, कभी कभी dry season में क्या होता है, elephant and wild boar incursions into fields are very common. जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे खेत होते हैं वहाँ पे जब लोग खेती करते हैं तो ये जो एनिमल्स हैं वो उनके खेतों में घुस जाते हैं. एंड एलिफेंट्स, वाइल्ड बोर्स, दीज आर द बिग एनिमल्स, एंड ऑफ कोर्स दे डिड व्हाट, वो क्या करते हैं, वो लोगों का नुकसान कर देते हैं. दिस इज द इंकर्शन, इट मीन्स दे अटैक्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स, और उसकी वजह से फार्मर्स अपने जो फार्म है वो अच्छी तरह से उनमें खेती बाड़ी नहीं कर सकते. सो ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, जब आपका नुकसान होगा तो आपको गुस्सा आएगा. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द विलेजेस, जहाँ पे विलेजेस को भी उनके माइंड में जो एनिमल्स है उनके प्रति क्या है, द्वेष है, उनके प्रति बहुत गुस्सा है. सो यहाँ पे दिस इनकर्शंस ऑलवेज हैपेंड. ओल्डर लेपर्ड्स लाइक पार्थुस जो एक बूढ़ा शेर है, who have lost territory in the forest often carry away livestock from the villages. बहुत सारे लेपर्ड्स भी गांव में घुस जाते हैं. लाइवस्टॉक्स जो बकरियां हैं, जो भेड़ बकरियां जो फार्मर्स के पास हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन पे ये जो ओल्ड लेपर्ड्स हैं जिनकी टेरिटोरी चेंज हो गई है, यानी ओल्ड एज की वजह से अपना एरिया उन्हें छोड़ना पड़ता है. एंड ऑफ कोर्स टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन they need to attack on the livestock of the villages.
तो हमेशा वो भेड़ बकरियों पे क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, उनमें बहुत सारी भेड़ बकरियों की जान चली जाती है। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम इन द फॉरेस्ट एरिया। सो we had just discussed about the main problem. So these forests often carry away livestock from the villages, and this creates resentment among locals towards the animals on occasions, leading to unpleasant situations. तो उनकी वजह से लोगों का गुस्सा बाहर निकल आता है। कई बार वो क्या कर देते हैं, एनिमल्स को जालों में या फिर एनिमल्स को फंदों में फंसा देते हैं, और उनकी वजह से ये जो एनिमल्स है अपनी जान गवा बैठते हैं। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट वी हैव at the edge of the forest and at the edge of the forest and the human settlements. So this particular problem someone needs to solve. ये जो प्रॉब्लम है किसी ना किसी को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम जो शाज़ जंग ने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, दैट इज BCRTI, तो वो ये जो एजेंसी है वो ये जो सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। इन व्हाट वे, लेट्स सी। पुटिंग टूरिस्ट currency to good use under the BCRTI umbrella. Shaaz provides locals with occasional training. It means whenever, remember, we have the wildlife safari. जब भी हम जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, जब भी हम फॉरेस्ट देखने के लिए जाते हैं, एनिमल्स देखने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त बहुत सारी जो फॉरेन करेंसी है, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ जो एनिमल्स है वो देखने को आ जाते हैं। और ये जो टूरिस्ट करेंसी है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोगों को मिल जाती है या गवर्नमेंट को मिल जाती है। सो अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन, अंडर दिस अम्ब्रेला BCRTI, शाज़ प्रोवाइड्स विथ ओकेशनल ट्रेनिंग टू द पीपल। वहाँ के जो लोग हैं तो उनको ओकेशनल ट्रेनिंग देने का काम इनकी एजेंसी करती है, with the aim of educating locals on the merits of conservation and to help them बेनिफिट फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी। तो लोगों को जो टूरिस्ट करेंसी से पैसे मिल रहे हैं तो उनका कुछ हिस्सा लोगों को भी मिले, उनका भी भला हो, ऐसी इस ऑर्गेनाइजेशन की सोच है, और ये सोच बहुत अच्छी सोच है। एंड ड्यू टू दैट दे हैड गिवन दी वोकेशनल ट्रेनिंग टू द पीपल टू कंजर्व द नेचर। तो किस तरह से इसका जो फायदा है, टूरिज्म का जो फायदा है, वो लोगों को किस तरह से मिल सकता है, उनको बताना बहुत जरूरी है। इफ वी आर टेलिंग देम इन व्हाट वे वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स, सो दे विल डेफिनेटली रेडी टू प्रोटेक्ट द नेचर, टू कंजर्व द नेचर। सो द विजिटर्स एट द रिसोर्ट आर वेलकम टू द वॉलंटियर टू टीच अ स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस। लोगों का जब भी कोई हमारे यहाँ घूमने के लिए आता है, बाहर से कोई आता है, तो उनके लिए जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड करके हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू अर्न द मनी। एंड हियर द विजिटर्स दे वर वेलकमिंग बाय द वॉलंटियर्स who learned something from the occasional classes, and these acquired skills, these people, they will acquire the skills, and the acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a far away city। जहाँ पे लोग टूरिज्म होता है वहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है तो उस एरिया में ही होनी चाहिए। तो बहुत सारे रिसोर्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। इट मीन्स नागरहोल, इस एरिया में, नागरहोल जंगल में बहुत सारे रिसोर्ट्स अभी मौजूद हैं जिनका जो काम है लोगों की सहायता करना, लोगों की हेल्प करना, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करना, ये सारे काम आज रिसोर्ट कर रहे हैं। एंड दे नीड द स्किल्ड एम्प्लॉयज। इट मीन्स एम्प्लॉयर्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास स्किल हो। तो ये सारे जो स्किल्स हैं वो देने का काम ये जो एजेंसी है वो करती है, जिसकी बदौलत आज बहुत सारे उस गांव के जो लोग हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट उनके एरिया में ही मिल गई है, उनको काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ दे आर अर्निंग द मनी with the help of the resorts. They are working under so many resorts, and of course this is a good kind of the life, because whenever you are working near to a village, that is one of the good way to live your life. And here they doesn't need to go far away city.
उनको शहरों में जाके काम करने की अभी जरूरत नहीं है। सो Medicauda, this is the name of the person. Medicauda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the bison. So he had given one of the name of the person whose name is Medicauda. Medicauda is a person who had taken the training from this BCRTI and बिफोर दैट ही वॉज वन ऑफ द लोकल एग्रीकल्चरिस्ट, एक छोटा सा फार्मर था, लेकिन बाद में BCRTI से ट्रेनिंग लेके ही जो इंसान है ही बिकेम ए सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट. ए सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट मींस एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बिकॉज ही नोज मेनी थिंग्स अबाउट द नेचर. सो ही बिकेम ए सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट. तो इस तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है अगर आपने अगर एक स्टेप उठाई तो उसकी बदौलत आप कई सारे लोगों का जो लाइफ है, कई सारे लोगों की जो लाइफ है वो अच्छी कर सकते हो, अच्छी बना सकते हो. सो हियर दिस पर्सन इज वर्क्ड अंडर द बाइसन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाइसन. बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द margin question, that is the visitors are welcomed. Why the visitors are welcomed? Because they can train locals in skills which enable them to find employment in wildlife resorts. Because visitors they needed special treatment. अगर हम अच्छी ट्रीटमेंट टूरिस्ट को देते हैं तभी जाके टूरिस्ट हमारे यहाँ आने के लिए उत्सुक होते हैं और तभी जाके टूरिस्ट की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे बढ़ती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव स्किल्स which enable you to find employment. And here in this wildlife resorts, if you have the knowledge, if you have the skill, so definitely you will get the job. So here we have the example of Medicauda who worked under the bison. Let me tell you something about the bison. The bison is a luxurious resort. Luxurious means this is a big resort जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ठहरते हैं. And this resort owned by साद बिन चंग. इस पाठ के जो लेखक हैं साद बिन चंग, इन्हीं का ये रिजॉर्ट है. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दी पर्सनालिटी. साद बिन चंग, दिस पर्सनालिटी इज द नेफ्यू ऑफ ग्रेट क्रिकेटर मंसूर अली पतौड़ी. एंड ये जो मंसूर अली पतौड़ी थे जो ग्रेट क्रिकेटर हैं, and of course remember he is one of the person who belongs to the Mansur Ali Khan Pataudi's family. He was the nephew of the Mansur Ali Khan. So it is located on the banks of Kabini river. Kabini river के corner पे bank पे this particular resort was located at the junction of Nagarhole and Bandipur. बंदीपुर और नागरहोल के जंक्शन पे ये जो रिसोर्ट है वो लोकेटेड है. And this is the sanctuary, we all know it very well, that in the state of Karnataka. So this Nagarhole area is in the state of Karnataka. Already we have discussed about it. So कई सारे लोगों की लाइफ बदलने का काम ये जो एजेंसी है वो आज कर रही है, BCRTI, which was started by the Saad bin Jung. So let's see that in the past I have lost almost 80% of a season's yield of sugarcane to such animal attacks. So what he said, what Medicauda said कि कई बार ऐसा होता था कि मेरे खेत के 80% जो फसल थी वो कई बार शुगर केन की जो फसल थी तो कई बार क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी एनिमल्स अटैक की वजह से. बट नाउ हिज पर्सपेक्टिव वाज टोटली चेंज्ड एंड ही सेड दैट आई यूज्ड टू हेट देम. वो कहता है कि मैं पहले एनिमल्स से हेट करता था, उनका द्वेष करता था, बट नाउ माय पर्सपेक्टिव इज टोटली चेंज्ड. ही सेड दैट बट नाउ आई हैव लर्नड how these animals, this area, this nature is important. Why important? Because these animals are so valued and we need to protect them. It's very important. Now he understand the importance of the nature. तो लोगों का जो नजरिया है वो बदलने की कोशिश हर एक को करनी चाहिए और यही काम जो है वो साथ जंग जो है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं. सो साज जंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट नाउ एंड ही सेड दैट दिस पर्सन said that now he understands the value of protecting the animal as well as the nature. I have known the jungles for 35 years
So he said that Shaaz Jung said that he known the jungle for 35 years. He said, sorry, this person said that वो 35 साल से इस जंगल को जानता है. I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. वो कहता है कि मैं एक अच्छा गाइड बन सकता हूँ. क्यों? क्योंकि इस जंगल को 35 साल से जानते हैं. If you have this type of the vast experience, so it's very easier job for you to guide the people. तो इन्हें अभी पता है कि किस तरह से लोगों को गाइड करना है, बिकॉज ही नोज वेयर द एनिमल्स आर. एनिमल्स कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेट यानी कहाँ पे रहते हैं, उनके हैबिटेट का एरिया कौन सा है, ये इन्हें अच्छी तरह से पता है. और लोगों को गाइड करके वो अपनी जो कमाई है वो भी कर सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं, पेट भर सकते हैं. सो नाउ ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जंगल. इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक. नाउ ही सेड दैट कि एनिमल की वजह से, इस नेचर की वजह से, जंगल की वजह से आज उनके जो फसल जो खराब होती थी, आज एनिमल्स की वजह से ही उनका पेट भर रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं. सो नाउ इफ रिमेंबर वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ द मिडल वे. अगर हमने इस तरह का मिडल वे निकाला तो डेफिनेटली एनिमल्स को भी फायदा होगा और ह्यूमन बीइंग्स को भी फायदा होगा. सो इन द लास्ट पैराग्राफ Shaaz Jung said to us that the forests have taught me many things. He said that कि जंगल की वजह से वो बहुत सारी बातें सीख सके. कौन सी बातें सीख सके? Let's see. For instance, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है. वो कहते हैं listening is a sense far more important than sight. देखने से भी ज्यादा सुनना जरूरी है. Because in the forest it's very important to be alert. If you are listening, that time it's very easiest task for you to go around in the jungle and of course to save your life as well. So he said that कि जंगल ने मुझे ये सिखाया कि देखने से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट है. लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन सीइंग, और sight is more listening is more important than the sight. So you have to switch off your vehicle. जब भी आप कभी जंगल में जाते हो तो अपनी जो व्हीकल है, अपनी जो गाड़ी है, आपको बंद करनी पड़ती है. You need to sit and listen. आपको पहले बैठना पड़ता है और सुनना पड़ता है. Because he explains that for the forest is constantly communicating through the voices of birds and animals. Because nature is always communicating with all the creatures which are included in the nature. And this is the voice of the bird and animal. Animal की भी अपनी एक भाषा होती है, पंछियों की भी अपनी एक भाषा होती है. लेकिन इनको अगर आपको समझना है तो उनको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा. तभी जाके आपको समझ में आएगा that what kind of the things they would like to convey to you. So here he explains that nature or the forest is always constantly communicating through the voices of the birds and animals. Tracking an animal also teaches you life lessons. अगर आप किसी जंगली जानवर पे अगर रिसर्च कर रहे हो तो उसको अगर ट्रैक कर रहे हो आप, तो कई बार आप कई सारी चीजें अपने आप ही सीख जाते हो. The Black Panther has taught me patience. जैसे शाज़ जंग, इन्होंने पेशेंस किससे सीखा है? सो ब्लैक पैंथर से उन्होंने ये जो पेशेंस है वो सीखा है. And he even said that, but above all, it has taught me to never stop discovering. वो कहते हैं कि एक बात मैं और सीखा कि लाइफ में कभी भी आप अगर नई चीजें ढूंढना बंद नहीं करोगे, या नई चीजें कभी भी लाइफ में ढूंढने से हिचकिचाना नहीं होता. अगर आप हिचकिचाए तो डेफिनेटली आपका उसमें नुकसान है. तो लाइफ में कभी भी चीजें, नई चीजें सीखो, नई चीजें देखो, एंड नई चीजें ढूंढने पे अपने माइंड को मजबूर कर दो. सो तभी जाके आपको लाइफ का मजा आएगा. सो देयर आर जस्ट सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड. अगर आपने अच्छा सीखा, आपने अगर पेशेंस रखा, आपने अगर ऐसे वाइल्ड लाइफ ये जो है इनमें अगर इंटरेस्ट दिखाया, सो डेफिनेटली यू हैव सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस जिन्हें आप बाद में लोगों से क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो. बिकॉज दिस लाइफ इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल लाइफ जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होती. सो दिस एक्सट्रैक्ट was adapted from the Season Travelers magazine
which was published by Land Rover India. And this is the experience of the wildlife photographer, cinematographer Shaaz Jung, who is the nephew of Mansur Ali Khan Pataudi. So here we had discussed about the experience of Shaaz Jung and various learnings, various teachings of the nature, and these teachings definitely helped us to grow in a good way, to have the positive outlook towards the life. It's very important to have the positive outlook, because on this outlook your whole future is belongs. So I hope now you have understood the particular lesson, and if you have any kind of the problem, if you have any kind of the query, you can comment me in the comment box. I will try my best to resolve your queries. So thank you everyone for watching my videos. Stay home, stay safe, stay tuned. Thank you everyone.